press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. So welcome to News Laundry Interviews. Today I have someone who many of you may not recognize. I would not have recognized young Hardik had I just met him on the street. But last weekend, if any of you listen to our podcast on News Laundry, Awful and Awesome, my weekend was made because I saw the most amazing storytelling to come out of an Indian stable that I've seen in a long time. I was blown away. And I tweeted and I found out that the same person has a hand in both. So Hardik, welcome Hardik. Thank you News Laundry. Thank you Abhinandan. So it is a pleasure to talk to you, if not meet you. I loved कामयाब. For our audience, कामयाब एक हिंदी फिल्म है जो रेड चिलीज ने प्रमोट किया. उसके बारे में आप बताएंगे whatever is the background action. वो Netflix पे है. मैंने वो देखी और मैं चकित रह गया कि कितनी ऑथेंटिक है. और आप बोल रहे हो कि तुझे क्या पता क्या ऑथेंटिक है. भाई मैं भी 1 साल एडी रहा हूँ बॉम्बे में और मॉनसून वेडिंग में मैं कैमरा असिस्टेंट था. तो मेरा जो एक हाँ, it was a very new world for me. I wasn't from the world of films, but I'll tell you about that. मैंने देखी, मैंने कहा यार, this guy has done an amazing job. And then I saw your name in the credits of Patal Lok, where also you are a co-writer. Yeah. Both amazing pieces. And then I found out you have made Ahmedabad Ma Famous. What is it called? So you have it. Yeah, Ahmedabad Ma Famous. So Hardik is a filmmaker, writer, and I am sure will be one of the biggest names. I hope talent like yours should be in due course. I will get into your background later, but first I want to know the story behind कामयाब. आपने कब लिखी, क्यों लिखी, कब रिलीज हुई और कोविड के 1 हफ्ते पहले रिलीज हुई. मतलब जब मैंने देखा मैंने कहा how come I haven't heard of this film. फिर मैंने पढ़ा कि इतना बुरा टाइमिंग था. तो tell me about the making, the writing, and how it completely ruined everything. कामयाब is a thought that I had in 2013 back. और तब उस पे एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी मैंने about जो वो संधिसुदा के जो रात को जो एक्टर्स आते हैं जो बेचने वो तेल और वो आयुर्वेदा की अलग अलग चीजें मतलब और वो सब इतना अचंभित बिहेव करते हैं जब वो उस पे शूट पे होते हैं कि पहले मेरी हड्डियों में बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था. और अब मैं सोच रहा था कि यार मेरा ये बंदे को तो मैंने कल देखा था वहां मडाईलैंड में, इसके हड्डियों का प्रॉब्लम था मतलब सो आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट कि यार ये रात को जो टीवी देखते हैं ना उसमें ये एक्टर्स को दे आर पेड ऑफ कोर्स मतलब और दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस. एंड मैंने तभी एक ये शॉर्ट फिल्म लिखी और फिर तब मैंने विक्रमादित्य मोटवाने को मैं असिस्ट कर रहा था लुटेरा में. और लुटेरा के असिस्टिंग के बाद मैंने उनको ये एक शॉर्ट फिल्म दिखाई स्क्रिप्ट. तो उन्होंने बोला आइडिया बहुत अच्छा है और मजेदार है, करेंगे, लेकिन शॉर्ट क्यों कर रहा है. उनके साथ एक देवशीष मखीजा करके भी फिल्म मेकर है. उन्होंने बोला कि यार इसको फीचर बना, इसको शॉर्ट तक मत सीमित रख. तो मैंने सोचा कि ठीक है इस पे फीचर करते हैं. और उस दौरान क्या हुआ अभिनंदन, आप मानेंगे नहीं, 2014 में बर्डमैन रिलीज हुई और मैंने देखा कि अरे यार ये तो एग्जैक्टली वही वाला आइडिया है मतलब. और मैं थोड़ा सा एकदम वो होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि बड़ा ओरिजिनल आइडिया है आपके पास मतलब और फिर उस पे कुछ चीज हो जाती है. तो मैंने विक्रम को जाके बताया ये चीज, तो उसने बोला तू चिंता मत कर, तेरी फिल्म बहुत अलग है, योर्स इज अ वेरी इंडियन कंटेक्स्ट अबाउट दीज 80s 90s में जो पुराने साइड एक्टर्स हमेशा जो पीछे हुआ करते थे मतलब एंड देयर स्टीरियोटिपिकल नेचर ऑफ देयर एक्टिंग एंड देयर क्लीशे डायलॉग्स एंड ऑल. सो यू आर सेलिब्रेटिंग दैट, डोंट वरी अबाउट इट. सो फिर मैंने इसकी स्क्रिप्ट पे काम किया और एक्चुअली स्क्रिप्ट पे काम करते करते दौरान में अहमदाबाद में फेमस भी बना रहा था और ट्रैप भी को राइट की थी मैंने विक्रम के लिए अमित जोशी के साथ. तो वो 2-2.5 साल वो जब असिस्ट करते हो ना तो जब निकल जाते हैं उसमें, क्योंकि आपका राइटिंग से ब्रेड एंड बटर नहीं हो रहा है, खास करके आपकी अपनी फिल्म जिसका कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है मतलब So somewhere around then 16-17 I had a proper draft which I was ready with. And what happened is that I also had made another short film called The Affair, which is also on YouTube, about the couples who sit on these marine drives and Worli seafood. So Manish Mundra happened to see The Affair और उन्होंने बोला कि वो फीचर स्क्रिप्ट जो आप करना चाह रहे थे वो क्या है. और मैंने उससे बताया कि I wanted somebody like Sanjay Mishra and Deepak Dobriyal to come in this film. And it's a film that is talking about this side actor's journey in a way, character actor जो जिनका शरीफ टर्म होता है कैरेक्टर एक्टर हिंदी फिल्मों में मतलब.
So and Sanjay Mishra is somebody who has done both. Like, he has done mainstream stuff where he has been a character actor, so to say, doing stereotypical lines, imitating Jeevan Pava and all that kind of stuff. And at the same time, he has helmed Aapko Dekhi also. So I was wanting somebody like him. So that empathy that you have for these guys kind of comes automatically because of this casting idea. How old is he? I mean, did you have him in mind when you were writing it, or he was one of the people you auditioned और फिर वो आए तो कर दिया? No. In fact, संजय मिश्रा दिमाग में थे ही. पहले मैंने एक ये आइडिया सोचा था, और ये मैं थोड़ा सा फिगर कर रहा था कि क्या मैं एक फिल्म बना सकता हूँ जिसका नाम होगा कालिया, और मैं विजू खोटे जी को, मतलब एक डॉक्यू फिक्शन टाइप एक आइडिया पहले मैंने सोचा था कि क्या विजू खोटे जी, जिनको 40 साल बाद भी लोग ये पूछते हैं कि अरे वो कालिया कितने आदमी थे, मतलब सो इफ आई कैन फॉलो हिम अराउंड इन टुडेज डे एंड एज एंड how he would feel, but then that didn't look like an idea that would at least be reaching to audience. वो शायद फिल्म फेस्टिवल में कहीं जाएगा और उसके बाद शायद उसका मतलब उसका कोई भविष्य नहीं रहेगा. So that is when then the other option, once I went into proper fiction, then it was Sanjay Mishra. There was no doubt about it. How old is Sanjay Mishra? Because Sanjay Mishra is actually around 55, 56. बट ही हैज दिस अमेजिंग एबिलिटी. और अच्छे एक्टरों की ये बड़ी खूबी होती है कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकते हैं 20 साल पीछे, 20 साल आगे. वो बुढ़े भी लग सकते हैं, जवान, मतलब fascinating. I was like, and incredible. ये नहीं कि जबरदस्ती एक So and in fact, because पहले मुझे ये भी लग रहा था कि यार संजय मिश्रा जी की खुद की जो है वो 8 साल की और 6 साल की 2 बेटियां हैं, तो उनकी ग्रैंड डॉटर कैसे पास ऑफ में कर पाऊंगा. लेकिन ये ऐसा होता है कि ये, क्योंकि आप अगर उनको नजदीक से जानते हैं फिर आप ये चीज से देख सकते हैं. अगर आप उनको दूर से जानेंगे और उनको सिर्फ एक पात्र की तरह देखेंगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट ही कैन pull that off easily, so that is what. And I think बगैर संजय मिश्रा के this film wouldn't have been what it is. I mean, there is no way the film wouldn't have been made also without him, because he is such an integral part of this universe. I'll tell the audience, इसमें मुझे तो मतलब the opening sequence में I burst out laughing. It is so beautifully done. और उसमें एक डायलॉग है, बड़ी पता नहीं वो किसने सोचा था, मेरा एक उसूल है, डागर साहब बोलता है, डागा साहब this is from दीवार, I guess. डागा साहब, मेरा एक उसूल, डागा साहब, enjoy life और option क्या है. So when that dialogue, I burst out laughing. I was sitting alone at home and I don't like watching films on laptop. I'm a guy, अगर मैं सिनेमा जाता हूँ, मुझे सिनेमा चाहिए, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे पूरा atmosphere चाहिए. Outing for me, cinema is an outing. It's not a Netflix experience. When I saw it, my heart broke कि साला ये फिल्म मैंने घर पे क्यों देखी. You burst out laughing and you feel you're alone. सिनेमा में आप हंसेंगे, 10 और लोग हंसेंगे. It's an experience. So who the hell thought of this dialogue? It is brilliantly stupid. It is just amazing. Yeah. Actually, there is so what happened is that one of my very dear friends, Vivek Soni, who is also a filmmaker, upcoming filmmaker, we write together sometimes. And he said that कि मैं ना अपने दोस्त की शादी में गया था, और उसकी जिस उसके दोस्त की शादी थी, उसके पिताजी ना, शादियों में पिताजी हमेशा भाग दौड़ कर रहे होते हैं, टेंट वाला आया हुआ, ये आया हुआ है, खाना वगैरह, मतलब तो उन्होंने विवेक जब शादी में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि यार अंकल बड़ी भागा दौड़ी कर रहे हैं. अंकल से उन्होंने पूछा, अंकल ये सब तो ठीक है, आप कैसे हैं? तो अंकल ने बातों बातों में बोल दिया, बस बेटा एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है, करके निकल लिए भाग के. तो विवेक ने जब मुझे डायलॉग बोला तो मुझे इतनी हंसी आई. मेरा यार दिस इज सो ब्रिलियंट एंड दिस इज एग्जैक्टली एज यू सेड, इट इज सो स्टूपिड. मतलब और मतलब हमारे यहाँ फिल्मों में कुछ तकिया कलाम जो होते थे ना, कि गुलशन ग्रोवर का तकिया कलाम होता था बहुत सारी फिल्मों में कि सीटी बजा के, मतलब या फिर दिल जले में था उनका कि गोलगप्पे कैसे खाऊं, और मरते वक्त भी उनको जब अजय देवगन गोली मार देते हैं तो वो मरते मरते भी बोलते हैं कि गोलगप्पे कैसे खाऊं, मतलब आई थिंक दैट कि ये क्या लॉजिक है, मतलब सो दैट इज व्हाई वी थॉट दैट संजय जी के कैरेक्टर को जब उसमें मार दिया जाएगा शेरा को, तो मरते मरते भी वो यही बोलेगा कि बस एंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है. और फिर वो अजीत टाइप के जो कैरेक्टर हैं, जो ऑफकोर्स अजीत के सन ने ही प्ले किया है, शहजाद खान, और वही कहते हैं कि अब ऊपर जाके एंजॉय करना लाइफ. And in fact, there are lots of scenes for the audience. There's a scene where, many characters who you've seen growing up, he was, I think, called Lilliput. I don't know, that was his screen name. I don't know what his name is. He's there. Mr. Khote is there. There are so many faces that we have seen, growing up, which are there in this one scene. Fantastic. Yeah, Lilliput ji, Birbal ji, Manmoji ji, Avatar Gill, of course. Avatar Gill, of course. It's just amazing the kind of thing you created. Now, I want to understand one thing.
I was when Meghna made her first film Filhal with Tabu and Sushmita and Palash and Sanjay Suri, तो मैं उस पे AD था और मैं भी स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था और मैं मॉनसून वेडिंग जब मीरा ने यहाँ दिल्ली में रहा, I was a केबल आपने मॉनसून वेडिंग देखी है? What a film to be on. Yeah, it was an experience. तो क्योंकि it's handheld and जो cinematographer थे डेक्लन क्विन, तो उनसे जब कट कॉल किया, वो एरी 16mm पे शूट हुआ था, सुपर 16 पे, उनसे कैमरा लेना था और केबल रैंगल करनी थी और पूरा रोल चेंज करना था. तो after that when I went to Bombay, I was like, all the stuff that you've shown of बहुत सालों बाद कोई मिलता है, अरे दादा आप कैसे हैं, there is an authenticity to that bond, but yet it is shallow, but yet it is deep. You know what I mean? You have recreated that beautifully. Tell me about that relationships. My theory is, in showbiz, the equilibrium of your emotional normality is different from the equilibrium of a normal person's emotional normality. क्योंकि जब आप एक फिल्म में काम करते हैं 10, 14, 18 घंटे 4 महीने एक ही बंच के साथ हैं, तो उनसे बहुत गहरी दोस्तियां हो जाती हैं. फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, अगले 3 साल तक उनसे मिलते ही नहीं. तो it is intense and yet not an important bond. And I think that is what your film has been able to do brilliantly. I have not seen anyone be able to communicate that so well. What has your experience been like that? And is that your understanding of people in showbiz? उनका equilibrium थोड़ा हटके होता है. हाँ, and especially for an actor, अभिनंदन, because actor का क्या होता है कि जैसे संजय जी जो पात्र प्ले कर रहे हैं, he's a 9 to 5 actor. ये वो नहीं है कि पैशन के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, ये रोजी रोटी वाला एक्टर है, मतलब तो दे हैव अ सर्टेन वे ऑफ एक्नॉलेजिंग पीपल ऑन सेट. जैसे जब वो शूटिंग में जब जाते हैं तो बंदा उनको बोलता है, अरे कैसे, अरे हाँ पिछले गणपति में मिले थे, क्या हाल है, मतलब अब वो ऐसा होता है ना कि मतलब दैट इज जस्ट अ स्टार्ट ग्रीटिंग. उसके बाद एक्चुअली काम की बात होगी, लेकिन काम की बात भी वही होगी ना कि भाई अरे उस फिल्म में क्या किया तूने, इस फिल्म में हाँ यार उसमें तो वो प्रोड्यूसर था, ये वो. इट्स गोइंग टू बी शैलो ओनली, बट दैट फर्स्ट ग्रीटिंग इज गोइंग टू बी एज इफ कि अरे बड़े जन्मों के, मतलब कि इनफैक्ट जब वो ऑडिशन देने जाते हैं तब बगल में उनके जो आदमी बैठा है, याद है हम वो गंगा की कसम में, मतलब हम दोनों वो डाकू बने थे, बोले ओ अच्छा तूने तब से अपना नाम बच्चन रख दिया है. तो मतलब सो इट इज लाइक दैट. इट इज इन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. It is also, what is great is I think again the fact that we cast Sanjay Mishra and he knew how these nuances are. He doesn't need to be told. When the camera is traveling with him, he knows कि अच्छा अगर दूसरे उसके कास्टिंग कंपटीटर्स खड़े हैं तो उन्हें कैसे ग्रीट करना है, मतलब कि उनके साथ भी रहना है, एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा एक एज भी दिखाना है कि देख तेरे से तो मैं बड़ा हूँ, मतलब so it's a lived experience. Yeah, it's a very lived experience that brought in like when he first pulls out that वो वहां पे वो जो उनका जो एक वो स्मोक पाइप है, वो जो पुल आउट करते हैं पहली बार और वो बोलते हैं सुधीर, और वो जिस तरह से वो स्मोक पाइप को ये करते हैं ना, ये मेरे जैसा फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उनको बता ही नहीं सकता था. It was just his way of putting out this character because he's lived this image. मतलब the idea was there कि हाँ भाई ये आदमी बाहर निकलेगा तो विग पहनेगा, but he brought so much life into something like this. Like even the fact that जब बाहर वालों से बात करेंगे तो hey hi how are you, मतलब एक fake English वाली और एक गहरी आवाज करके और जबरदस्ती वो इंग्लिश क्या I am also cool, yeah, I am also smoker यार, come now, मतलब so he has this knack यार, मतलब so I think it comes from his lived experience, of course, and of course some of it's from my lived experience about being around for 10 years in Bollywood and having seen these in fact the main moment in Kamyab post interval where he kind of fuck ups the dialogue and you kind of the tone of the film style, it actually happened with me, Abhinandan. You won't believe, हम ड्राई स्टेट में शूट कर रहे थे, एक पुराने एक्टर जिनको बहुत मानते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स उनके पैर छूते हैं, वो आए हुए थे और मैं फर्स्ट फिल्म इतना उनसे वो था कि भाई अरे यार ये आए हुए हैं, और उन्होंने ड्राई स्टेट गुजरात में मुझे कहा कि सुनना यार एक 30 ml लेके आना, मतलब तो मेरे अंदर का एकदम फैन बैठ गया. मेरे लगा अरे यार ये आदमी को मैं क्या मानता हूँ, मतलब और ये यहाँ मुझसे 30 ml मांग रहा है, मतलब सो एंड एक्चुअली नेक्स्ट डे ही कुडंट परफॉर्म, और सब मुझे बोल रहे बाद में, देख तूने नहीं लाया ना 30 ml इसीलिए. सो वो 2010-11 में मेरे साथ हुआ था और वो घर कर गया था वो चीज मुझे कि यार जिनको हम ये समझते हैं फिल्मों में, जब स्पेशली आई एम फ्रॉम बड़ौदा, मिडिल क्लास किड, जिनका फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है,
So when we come here, we think that कि oh my god क्या मतलब world है. When I take public buses मतलब sorry public transport बस में जाता हूँ तो मैं actually एक एक्टर को मिला था जो कंडक्टर से कुछ 2 रुपए के लिए लड़ रहा था और वो ऐश्वर्या राय का बाप था किसी फिल्म में. And I was wondering कि अरे यार he was like that and यहाँ पे ये 2 रुपए के लिए लड़ रहा है. So I mean there is kind of empathy also, but there is black comedy also मतलब. Yes, it's sad and it's only an outsider can observe all this, and I think you've done a brilliant job. Now tell me, when you made it, by your producers and the people who saw it, did they realize that you have an amazing thing on your hand? And then how hard was the release? आपने बोले 2018 में बनी थी. Yeah. 2020 में रिलीज हुई है, वो भी कोविड के एक हफ्ते पहले. तो मतलब what has that journey been like? And financially, will you be able to recover your money? Because it's sad if a film like this doesn't, because then there's no incentive to make more. Yeah. I mean, I am very, very glad that somebody only like Drishyam Films could have made a film like this, because they are always looking for newer voices. They are the ones giving opportunity to new voices. They are also somebody who understands that, giving complete freedom to a filmmaker will ensure a product that is his or her, completely, or they stand by it, At the same time, they are also somebody who look for collaboration so that the film gets a proper release, because they themselves are not like a Yash Raj Films that ki film bana di to ye lo release 2000 screen mein so we made this film in 2018 early. We shot it and then through the year we edited it. And we premiered at Busan International Film Festival in South Korea, which we had a really great 3 screenings in Busan. All 3 of them were houseful, and somehow Koreans love films like how Indians love it. 2018 May. Yeah, Busan. 2018 November May. And we really got good reviews and all, and we thought that अब हम 2019 में release हो जाएंगे. But 2019 में we also went through a lot of film festivals. What happens, Abhinandan, for a small film, that you need a presenter, you need a distributor who kind of says that, okay, I'm going to release this film, Drishyam is brave enough to make films the way they want it, but at the same time, they need, like even Newton had an Anandel Rai or a Color Yellow coming and, collaborating it to put it. Even for Masan, there was Anurag Kashyap and there was this French co-producers, and, the film got a great release. So similarly for Kamyab, Drishyam was looking for that kind of collaboration. We had a studio on board earlier, but that studio was not confident about Kamyab. Would you believe that? Now, but at that time they were not confident. They were thinking that अच्छा हाँ छोटा सा फिल्म है, पता नहीं क्या है, संजय मिश्रा है, दीपक डोबरियाल है, ठीक है, मतलब 2-4 कॉमेडी मोमेंट से चल जाएगा. And it gave all throughout 2019, it gave me sleepless nights. It gave me, because whoever saw the film in rough cut or first cut and all of that, they all said मजा आ रहा है, बहुत अच्छी फिल्म है, but support करने के लिए there was nobody standing there. Somehow 2019 we pulled all of it through film festivals where everybody loved the film in film festivals, and we came in Bombay in Mami Film Festival in the Discovery India section, and that's where Red Chillies ke producers were sitting. And they saw the film, and the crowd in Bombay, Abhinandan, went berserk. It was one of the finest screenings moments of my life, because here it was such an Indian grammar for a film like Kamyab कि यार हम जानते हैं ना कि ये क्लीशे डायलॉग्स क्या है, मतलब कि आज तेरे बापू जिंदा होते तो हमें पता है कितने खुश होते, मतलब अब मैं कितने फेस्टिवल को बाहर कर पाऊंगा ये चीज. जो क्लाइमैक्स सीन है, correct, right. So the grammar of this mainstream, the memory of mainstream cinema is something that Indians know it so well. And in Mami we had an amazing screenings. We had standing ovations and all of that. And Red Chillies then showed it to Shah Rukh Khan, who loved the film. And Shah Rukh Khan, for some odd reason, has this knack for loving films about films. He himself has always been around them. चाहे आप fan ले लो, चाहे आप बिल्लू ले लो, चाहे आप ओम शांति ओम ले लो, or even that cameo in Luck by Chance. In fact, when he came for premiere and then he partied with us, he told me that same thing, that I love films about films, but somehow in India they never work. But I know that my heart is always towards them, and somehow it Kamyab really touched him. He said, I saw it twice. Second time I saw it with Gauri also, and we loved it so much that we thought that we should present this, because otherwise nobody else would. And actually he was right. After his coming on board, we got a whole brand new marketing campaign, posters, we got a theatrical release, we got a distributors, invested in, we got a Netflix deal and all of that. So to be honest, yes, the film didn't do great box office, but it did great in terms of word of mouth.
it did great in terms of how people perceived a small film. लेकिन जब And वो then रिलीज हुई थी तब कोरोना का लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना को लेकर मैं भी I had stopped going to हाँ, cinemas and I go every week. I have to go, yeah, but I think people had yeah. stopped going by then. 6th मार्च को हम रिलीज हुए थे और 12-13 मार्च से थिएटर सारे बंद हो ही गए थे, you know. हाँ, So we had a week. I mean, and generally what happens in these kind of films, Abhinandan, is that एक हफ्ते के बाद ना वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड होता है, मतलब सो यू हैव टू काइंड ऑफ सस्टेन दिस बिकॉज इट्स नॉट अ वीकेंड फिल्म के आके मतलब कि 20 करोड़ का वीकेंड होगा या मतलब हम 20 करोड़ लाइफ टाइम कर ले वो भी बहुत बड़ी बात होगी कभी, लेकिन द फैक्ट इज दैट कि इट ओनली ग्रोज विद अ सर्टेन वर्ड ऑफ माउथ, स्पेशली इन बी टाउन्स और small towns and all, but वो मौका ही नहीं मिल पाया. But thanks, I mean, I can also thank in a certain way that lockdown ensured that everybody is sitting at home, and now that they are sitting at home, everybody watched Kamyab, and we got a real audience, right? Yeah, that's fantastic. I think that was satisfying for a filmmaker. Yeah, and my producers are also very happy with that fact. With Red Chillies, it gave them a great commending. मतलब उस तरह के कमेंट्स आए, उस तरह के रिमार्क्स आए कि इट इज सो अमेजिंग ऑफ रेड चिलीज टू सपोर्ट अ फिल्म लाइक दिस, कम ऑन बोर्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड टू शाहरुख खान साहब की इतना सारा मतलब उन्हें इज्जत नवाजी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑफ कोर्स दृश्यम वाज वेरी हैप्पी विद दैट, दैट एवरी फिल्म ऑफ देयर्स kind of comes up with a new summit, with a Newton going to an Oscar, with a Kamyab being won hearts in the film industry, Shahrukh Khan presenting it, Apollo Coelho, tweeting about it and stuff that happening, So I'm glad that way that at least कि इतनी लंबी जर्नी जो 2013 से शुरू हुई थी इसकी एटलीस्ट कहीं जाके कल्मिनेट हुई. और चाहे आप कितना भी मतलब कितना भी इंडी फिल्म मेकर हो या कितना भी मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर हो, एट द एंड ऑफ द डे वो ये चाहते हैं कि मतलब एटलीस्ट ऑडियंस हमारी फिल्म देखे, मतलब उसके बाद चाहे गाली दे देना जो भी कर देना, लेकिन एटलीस्ट देखो यार, मौका तो दे. तो ये अब मैं I don't want to waste too much time in that because I want to talk to you about things today, so I'll just tell the audience, you are an engineering graduate, you're from Gujarat, आपने engineering की, मन नहीं माना, आप copywriter की, advertising, फिर आप filmmaker बने, assistant बने, आपने अब ये film बनाई है. तो ये उनकी जर्नी है. लेकिन मैं आगे की बात करता हूँ और अभी की बात करता हूँ. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बॉम्बे में 1 साल, और मेरे अच्छे दोस्त हैं जो फिल्म मेकर्स हैं और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, और मैं एकदम आउटसाइडर था, और मैं बहुत यंग था व्हेन आई वेंट फ्रॉम हियर एंड देन आई वेंट देयर एंड आई सॉ आई रिमेंबर कि हम जब आई थिंक महबूब स्टूडियो कमाल स्टूडियो शूटिंग करते, आई थिंक गोल्डी वाज मेकिंग बस इतना सा ख्वाब है, देवदास बना रहा था शाहरुख के साथ, साली बना रही थी फिलहाल, तो लंच पे सब आते थे और लाइट दादा और मेकअप दादा. और when you're from Delhi, it's something very unique, so you observe things which an insider doesn't observe. And at the end of 1 year my feel was कि showbiz में ना, it's not a good or bad thing. If you're a star, you cannot be normal. It is a question of time when you tip over. But आपका जो normal होगा ना, वो दूसरे लोग के normal से अलग होगा. What is your understanding of this world where the stakes are so high? Success means you're king of the world. Failure means you're nothing, which is why people cling to it. Do you see yourself today? Like I saw one, interview of Shahrukh where he had said, I don't live a normal life. I know that. He is unique. I think he is self-aware of his not being normal because his transition, and he acknowledges that. I think many don't even realize that. Do you think at some point you will be that, what is a caricature of Bollywood, depending on how successful and when you get? And do you think you will be able to observe that change in yourself? Or is it possible to not undergo that change? Have you met people who are what we call normal? And I'm not judging whether it's a good thing or bad thing, but there is a Bollywood normal and there is a Aam Aadmi normal. Yeah. Where are you? There are two ways of saying this. One is that I am on my way to a Bollywood caricature because you can see the hair and all of this. but having said that, I want to be also very self-aware because हम जहाँ से आए हैं हमारे पास कुछ नहीं था. ठीक है, हमने 3 लोगों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसे सडनली वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया, जिसे हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होगा. तो कल को अगर हमें 3 लोगों को वापस कैमरा उठा के, ट्राइपॉड उठा के साउंड रिकॉर्ड करने के हुए रास्ते पे जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे. हम उससे बहुत खुश हैं
क्योंकि हम एटलीस्ट फिल्में तो बना रहे हैं, हमारे पास डिजिटल हैज एंश्योर्ड दैट हमारे अंदर का फिल्म मेकर मरे नहीं. ये नहीं है कि मतलब कि वो जब स्टॉक मिलेगा या स्टार मिलेगा तभी हम so that is a good part. We have to be very self-aware in today's day and age. I can see sometimes I mean I am enough self-aware that कामयाब का क्लाइमैक्स वो जो आप सब जानते हैं, वो बनाने के बावजूद it took us शाहरुख खान for a film to release, for a film to see daylight. जितना भी मैंने सुपरस्टार को उसमें वो किया है, लेकिन at the end of the day प्रीमियर पे शाहरुख खान आए थे तब जाके फिल्म रिलीज हुई है. So we know the irony behind it, and we know that I mean of course it's iconic also for him to come and support the film. So of course not denying that at all, but yeah, I mean you have to be self-aware. You have to ensure that you keep people around you who are the ones who will always tell you that boss, this is working, this is not working. Don't be under this that director ने मैंने सोच लिया तो मेरा विजन है. ऐसी तुम्हारी विजन के लिए कोई भारत इंतजार नहीं कर रहा है, और उसके लिए इतना सारा करोड़ों रुपए डालने की जरूरत भी नहीं है. You have to be very very practical in terms of in approaching what kind of stories you want to tell, and in telling that you have to ensure that यार ये करने में मुझे मजा आएगा. आज ये फिल्म सक्सेस हो गई तो बोले कल अब चल तू रणबीर कपूर या रणवीर सिंह या उनके साथ भी हम बिल्कुल काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम ये स्टोरी को इस तरह से बताना चाहेंगे तभी इसका मतलब निकलेगा. नहीं तो फिर it's then a long road down where you kind of just go into thinking that कि मुझे ये कहा गया है मैं ये करता हूँ, वो उसकी इमेज है तो मैं ये करता हूँ, मतलब वो प्रोड्यूसर का पैसा लगा है तो मैं ये करता हूँ. I mean हम जहाँ से आए थे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, मतलब, और हमें कामयाब इतने बनाने में बोली थी तो उतने में बना दिया हमने. So that way we are confident. I mean. Okay, but was your struggling years the luck by chance type struggle? I mean was it the stereotypical struggle कि ये 4 लोग रह रहे हैं, इस महीने आएगा, माँ बाप बोल रहे हैं अबे इंजीनियरिंग किया कुछ ढंग का काम कर ले, मतलब did you doubt कि बॉस यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा? Because the emotional toll that Bombay can take on you. I was very lucky. I had very good established friends, so they took care of me. Like, and I could imagine for a person who's just given up everything and say, I have come to make it, it can completely destroy you emotionally. Yeah, you have to be very smart about these things. मतलब कि मैंने शादियां शूट की है, मैंने कॉर्पोरेट वीडियो भी शूट किया है, because I knew that I am here for the long run. ना मैं कहीं और जाके there is no plan B. You cannot have plan B जब आप यहाँ पे आए हो. मतलब अच्छा घर पे तो पापा का बिजनेस है, या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं जाके मतलब और मैं इंजीनियर भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, बीटेक. मतलब तो मैं वो मस्ती दही सेक्शन में जहाँ पे काम करता था. By the way, Hardik used to work for Amul. हमने Amul में I used to make a show called Highway on My Plate. हमने वहाँ with Rocky and Mayur. हमने वहाँ जाके शूट किया था अमूल का पूरा. तो आप वहाँ एक डेयरी इंजीनियर थे क्या? You used to engineer cheese. Yeah, dairy technologist. अच्छा, dairy technologist. So yeah, I mean I knew that कि अब यार मैं वहाँ जाके वापस मस्ती दही का प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, या मैं अमूल चीज नहीं मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा ना. मतलब अब ये इतनी दूर आ गए हैं, अब यहाँ ही बसना है, यही चीज करनी है. सो इसके लिए जो भी चाहिए ना, इसके लिए चाहे मुझे वर्ल्ड सिनेमा देखना है, इसके लिए मुझे चाहे 10 लोगों से जाके मिलना है, मुझे असिस्ट करना है, मुझे शादियां शूट करनी है या कॉर्पोरेट फिल्में बनानी है, मैं अवार्ड शोज की स्क्रिप्ट लिखनी है, सब किया है. मतलब बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर. एंड thankfully I didn't have to stay with 4 people because मैंने मतलब I stayed for 2-3 years, but उसके बाद मैंने तुरंत शादी कर ली थी. तो उसके बाद जो भी स्ट्रगल था वो मेरी वाइफ और मेरा साथ में रहा है. And we were batchmates in Jamia, so we knew each other very well and we knew each other's aspirations. That helps, I guess. If you have a soulmate over there, that can make that journey less lonely and more enjoyable. You enjoy the struggle together. ट्रू. तो और बहुत सारी चीजें ना ऐसा लगता है मुझे कि मेरे इस डिसीजन की वजह से हुई है. माय वाइफ लव्ड उड़ान टू मच. शी लव्ड उड़ान सो मच, दैट इज व्हाई आई गॉट कनेक्टेड टू विक्रमादित्य मोटवाने फॉर लुटेरा. आई फील माय वाइफ लव्ड सचिन तेंदुलकर, और मुझे सचिन की डॉक्यूमेंट्री वो जो बन रही थी सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, उसमें मुझे 15 दिन शूट करने को मिला था, एज अ सेकेंडरी डायरेक्टर आल्सो. सो आई समटाइम्स केप्ट थिंकिंग दैट इट इज हर एस्पिरेशंस दैट आर being given to me in a way, so there is that kind of an understanding that happened between us. And of course while I was making documentary, she was working for a corporate, she was working for BBC. So she's the producer of Ahmedabad Ma Famous in a way, because she supported that. Then we went to Ahmedabad, she gave the finance to all of that, so I mean that was a journey that we took together, and thankfully
it showed results. But yeah, I mean the struggle can be real for a lot of people, and they should be prepared for it. There is no other way. So if any of our audiences are listening and young people are going there, was go with a hard skin, a thick skin, and a tough back. But Yes. how did you get involved with ये जो पाताल लोक में वरुण को मैं friend मानता हूँ, वो he's an amazing guy, और संजय राजौरा उनकी जो ऐसी तैसी democracy, and when I had seen that I said यार this is the best Indian series I've seen. तो पाताल लोक पे काफी लोग बोल रहे थे, मैंने कहा ठीक है सब अपना डंका बजाते हैं, मैंने पहले हफ्ते देखी भी नहीं, फिर अगले हफ्ते जब मैंने देखी I was blown away by the authenticity, because it doesn't look produced. Sacred Games is brilliant. Yeah, I think it's got fantastic storytelling. It's a cliffhanger, but there is a level of it looks produced like a Yash Chopra film. वो जो authenticity यहाँ के थुल्ले की है, चौधरी की, और तो वो project आपको कैसे मिला, और आपने वो adaptation dialogue कैसे किया? I mean, one knows it's based on Tarun Tejpal's book, and much has been written about why that credit is given or not given. But let me talk about, as a writer, how did you get involved and what was your contribution to that process? So it's a very interesting story actually that जब Phantom Films हुआ करता था तब Phantom Films में ना every Saturday को एक स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे 7-8 स्क्रीन राइटर्स बैठ के. तो उसमें नवदीप सिंह होते थे, सुदीप शर्मा होते थे, अभिषेक चौबे होते थे, विक्रम मोटवाने, देवशीष मखीजा, अन्विता दत्त. So there used to be this really interesting group of people जो नए फिल्म मेकर्स को या इमर्जिंग फिल्म मेकर्स की स्क्रिप्ट्स पढ़ते थे और फिर उनको फीडबैक देते थे, मतलब और कभी कभार स्क्रिप्ट बहुत गजब होती थी तो फैंटम वुड पिक देमसेल्व्स अप. सो वहां पे मैंने कामयाब की स्क्रिप्ट दी थी और उन्होंने सबने मतलब उसको उसे ट्रैश किया था, किसी ने सराहा था, किसी ने मतलब सारे पॉइंट्स दिए थे. उससे बाद एक और स्क्रिप्ट दी थी मैंने जो मैं बनाना चाहता था, जो बनी नहीं कभी. बट उससे ना मैं नवदीप सिंह और सुदीप शर्मा के कांटेक्ट में आ गया था. मुझे उनकी राइटिंग बहुत पसंद आती थी. तो जब क्लीन स्लेट ये प्रोड्यूस कर रहे थे ये सीरीज, तो सुदीप वाज द शो रनर एंड ही वाज गिवन द मेंटल टू टेक इट अहेड, एंड ही थॉट दैट वी शुड हैव 3 more राइटर्स. बेसिकली जनरली राइटर्स रूम जब बनते तो उसमें 3 या 4 राइटर्स होते हैं along with the showrunner. And Sudeep had read कामयाब and he had also seen at that time Trapped just release हुई थी I think 2017 में, और Trapped को भी critically काफी acclaim मिला था और सुदीप ने देखा था कि had been working out, so he gave me an opportunity to come on writers room. And since उसके बाद Gunjit and Sagar, the other 2 writers, and we 3 kind of became a really interesting writers room. और फिर हमें जो है वो एक बेसिक आइडिया, तब नवदीप सिंह भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी एक आइडिया दिया था कि इसको हम एक इन्वेस्टिगेशन तरीके से देखते हैं, तो एक वो नोआर वाला जो एक फीलिंग है, गोइंग डाउन डीप डाउन द रैबिट होल वाला एक फीलिंग आएगा, मतलब टू रिसर्च एंड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दीज कैरेक्टर्स. मतलब तो हमें एक्चुअली क्लीन स्लेट ने 3 और राइटर्स को 12-15 दिन के लिए चित्रकूट, झांसी, दिल्ली ये सब जगह भेजा. बिकॉज दिल्ली से मैं था, मैं दिल्ली से नहीं था, बट दिल्ली में मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं 2-2.5 साल रहा था, तो एक थोड़ा सा एक दिल्ली का वर्ल्ड और आपको पता होता है. लेकिन पुलिस स्टेशन, मतलब ये कड़कड़डूमा कोर्ट कैसा होता है, वहाँ लॉयर्स कैसे बैठते हैं, लंच कैसे होता है उनका, मतलब ये सारी चीजें जो है पुलिस स्टेशन में कैसे राउंड होते हैं, मतलब ड्यूटीज कैसे शिफ्ट होती है, SHO DCP, ये पूरा जो हायरार्की कैसे चलता है वगैरह, ये सारा चीजें हम लोगों को. फिर हम चित्रकूट भी गए जहाँ तो हमने मतलब फिर किसी डकैत के सन से भी मिले, हम जो अब पॉलिटिशियन बन गए हैं, और फिर वहाँ पे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स से मिलना हुआ, जिसकी वजह से फिर जब हम आए यहाँ पे और फिर हमने इसका पूरा राइटिंग प्रोसेस शुरू किया. और आप मानेंगे नहीं, ये 2 साल प्रोसेस चला है, 2017-2018 पूरा, मतलब ये पूरा राइटिंग प्रोसेस चला है. 2018 के एंड पे the directors came on board when we had almost all the drafts of the script ready, and that's when Avinash and Prosit came, and once they came on board, then to of course matlab Sudeep had also thought about Jaideep Alawat, and I mean it's again Jaideep Alawat to Patal Lok is what Sanjay Mishra is to Kamyab, matlab आप डाल दो वो सारी authenticity, वो सारा world, वो सारा lived in feeling जो है वो उनसे आता है. मतलब और खैर पाताल लोक में तो और भी hundreds of characters हैं, मतलब जो इतने अच्छे कास्ट किए गए हैं, जिनको मतलब वो ऑथेंटिक लाइंस दी गई है. तो आई थिंक I mean that, or to be very honest, I was telling yesterday to my wife also that every time I would return from a Patal Lok writing session, we used to be so happy, like there is so much that I learned, because my learning as a screenwriter has been more of a coming of age or a slice of life or a that kind of a dramedy kind of a thing. But this
लर्निंग दिस इन्वेस्टिगेशन नोयर वाला जो जॉनर है ना, वो एक अपने आप में, बिकॉज आई लव दैट जॉनर. सो व्हेन ये इन्वेस्टिगेशन नोयर जिसको देखने में इतना मजा आता है, मतलब लेकिन इसको करे कैसे, इसको क्राफ्ट कैसे करे, ये मुझे एक लर्न करने के लिए बड़ी मतलब उत्सुकता थी. सो ऑल्सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जिससे मुझे ये लर्न करने को मिल रहा था, ये क्राफ्ट. Because Sudeep and Navdeep are somebody who are in a way champ in this genre. कि उन्होंने मतलब NH10, उड़ता पंजाब, सोन चिड़िया, that world. सुदीप ने सोन चिड़िया के वक्त इतनी सारी रिसर्च कर रखी थी बुंदेलखंड और डाकुओं पे और उनकी बुंदेलखंडी लैंग्वेज पे और वो सब पे, कि वो तो ये सारा वर्ल्ड जानते ही थे. मतलब ये मुड़ा मुड़ी, मतलब कछू कभू, मतलब जिस तरह से ये वर्ड्स यूज किए जाते थे, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा एक लर्निंग ही था. और ऑल्सो बिकॉज पाताल लोक हैड दिस रियली इंटरेस्टिंग सेट ऑफ किड्स, जो वो स्टेशन रैट्स होते हैं जो वहां पैदा होते हैं, और मतलब वो पूरी एक तो थ्रेड था पूरा वो. मुझे it was brutal. I think it was brutal but yet not voyeuristic. I think it showed you the brutality of the world we live in. And I think what was unique to Patal Lok was, मुझे पुलिस as an institution से सख्त नफरत है. और मैं अपनी हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि मैं अपने एक्टिविस्ट के दिनों में मैंने रात काटी है तुगलक रोड पुलिस स्टेशन वगैरह में. I don't think there are any people as heartless as cops. But I think what I liked about your film is this thing was that while the cop was not shown to be this upright, that he'll only do the right thing, he was also as brutal as anybody else. Yeah. But yet you could empathize with him, which I think Mr. Alawat, sorry, the actor's name is Jaideep Alawat. Jaideep, yeah. I think he managed to pull that off, that you hate him also, but you empathize with him also at some point. Fantastic. Yeah, I think what also happens, Abhinandan, is that ना कि इनकी वर्ल्ड की ऑथेंटिसिटी के लिए ना आप जितना ग्रे जाते वक्त वाइट में जाएंगे ना, उतना ऑडियंस और रिलेट कर पाती है. आई जस्ट फील दैट कि कि उनको जितनी जिंदगी की बिटर ट्रूथ से हम मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे ना, उतना वो कैरेक्टर के साथ और मतलब और जर्नी पे ज्वाइन हो जाएंगे. That is generally how I feel, because if you just show him that he's this goody guy and he's just the system around him is wrong and all of that, that never happens. We all are a part of system, we all have these grays and whites and blacks, and also we need to do that कि मतलब that वो जो डिक्की पे रख के ओल्ड मंक पीते हैं, मतलब that कि मतलब कि पुलिस में ऐसा, और वो कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि oh my god कितनी गलत बात है, मतलब बट अगर आदमी 16 घंटे ड्यूटी करेगा तो होगा ना यार उसका कहीं ना कहीं. It's a normal thing, correct. So yeah, that. And I also have to, we have to credit, Prosit and Avinash, who brought this world so authentically together. The locations that they chose, the way they shot it, the way Sanyukta has edited the series actually, जिससे हमें ये empathy भी होती है, at the same time हम investigation के साथ भी जुड़े हुए हैं. It's not like okay, अच्छा ये हो गया उनके. Not just a human story, it's also the thriller aspect is there. Yeah, so that I think, and also a lot of great backbone was writing actually, which Sudeep and we had the opportunity, because हमें 2 साल दिए गए थे, वरना जनरल ना 4-6 महीने दिए जाते हैं आपको, और फिर उसमें आपको 2-3 ड्राफ्ट देके फिर वो then you have to give it to director who will have to handle it. In this scenario, the producers were clean slate was very sure that we have to give it 1.5-2 years to write it. So clearly, if you let something be written well, the outcome is that much more likely to be more authentic. So I wanted to ask you 2 things. One is, what are you working on now? And one is specifically on Deepak Dobriyal. I think he is one of the gems of, पता नहीं बॉलीवुड कहते हैं आजकल नहीं कहते. Absolute gem. मतलब from सड्डी गली आया करो, वो कौन सी थी, तन्नू वेड्स मन्नू, to मैंने अभी अंग्रेजी मीडियम देखी, वो सकलेन मुश्ताक. Even in Hindi medium, he was so good. Yes, to your film, he's an amazing talent. Yes. I mean, what is the scope of a man like him? I mean, will there be a film made where he will be at the center? Where does that go? I so want to do that. मैं ना एक जमाने में मैंने एडवुड देखी थी, तो एडवुड में जो जॉनी डेप का जो कैरेक्टर है ना, मतलब कि टैलेंटलेस हैक है, लेकिन पैशन कितना है उसमें, मतलब देखा जाए तो, मतलब तो
तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इंडिया में कोई इस चीज को मतलब पर्सोनिफाई कर सकता है ना, मतलब इन अ वे दैट पैशन बहुत है लेकिन मतलब कि आता कुछ नहीं है कभी कभी, मतलब ऐसा एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करना हो, तो दीपक वुड बी सो फैबुलस अबाउट प्लेइंग दैट कैरेक्टर. In fact, if you will see, Deepak's range of films are so brilliant, from rom-coms to action to slice of life to something like Kamyab and all. The moment I went to meet him, I told him about this casting director character, and मैंने स्क्रिप्ट में एक तरीके से लिखा था, लेकिन दीपक played it in a very different way. एंड ही टोल्ड मी दैट कि हार्दिक, मैं जानता हूँ कि आपने इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसके साथ भी एक एम्पैथी रहे, साथ ही साथ ये भी एक कैरेक्टर ऐसा बना रहे जिसके लिए लोगों को प्यार हो जाए, क्योंकि आई मीन ही गेव दैट लोगो, नो काउच, नो ओनली कास्टिंग, वो दीपक का आइडिया था. So he gets involved so well with once he dedicates to the film, no, वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं सारी, मतलब he and Sanjay bhai would come and then they would do their dialogue rehearsals, they would talk to each other about something like this. And that is where, I mean, again, it's a learning that every time, if you are a first time director or a new person is making a film, take good actors, take really good actors, and वो कितनी जान डाल देंगे ना फिल्म में आपको भी नहीं पता होगा. मतलब मैंने वो डॉन ब्रैडमैन वाला डायलॉग लिखा था कि कि मतलब कि 99.9 एवरेज वाला, तो दीपक ने वो पकड़ के फिर उन्होंने स्टीव बकनर वाला डायलॉग खुद ऐड कर दिया. तो कि क्रिकेट के मतलब कि स्टीव बकनर था पहले, मैं मतलब कि ये करना चाहता था, लेकिन फिर सब बैट्समैन के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, मतलब सो ही केम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड दैट इज व्हाट अ गुड एक्टर ब्रिंग्स ऑन टीवी, कि मतलब सो दैट इज वेयर आई थिंक दीपक के साथ एक अलग पूरी फिल्म बनाने का तो मेरा सच में एक ख्वाब है ही, मतलब So what are you going to work on now? Because you have seen a very successful documentary film that won a national award. You've seen a very successful short film जो एक established house ने देखी और बोली we'll pick it up. Yeah. You've seen the success of a mini series and you've seen this. What are you working on now, and how will you deal with your first disaster? I think what I'm working right now is not going to be a disaster. So, but maybe disaster will come. Everybody, I mean, सबके life में आता है. Inevitable, yes. Yeah. I hope आपका अगला takes you to a level where you are, one of the biggest three. Because I really, I'm not just saying this. I've interviewed a lot of people. I don't say this to all of them. I'm amazed with your work, and I hope it's great. What is it? So I have already shot and directed a film called shot as in I have directed this film called Ruhi Afza, and Ruhi Afza. Yeah, so the next film that I have directed is called Ruhi Afza. पहले उसका नाम रूह अफ़ज़ा था. अब we are going to change the title, but yeah, Ruhi Afza is a horror comedy and it is being produced by Maddock Films, जिन्होंने स्त्री and Hindi medium भी produce की थी, Dinesh Vijan, and Ruhi Afza is going to be a really fun ride because I have already shot it and the edit is being done as we speak, and I myself am a big fan of the most cinematic genre that I consider is horror, और horror को subvert करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, मतलब which is why a comedy, I mean, you add an element like comedy to it, then it is even more fun. So Mriddeep Lamba, who's made Fukre and Fukre 2, he's the co-producer on the, and he's written the script along with Gautam Mehra. So, and it's a really मतलब fun script और बहुत सारी मतलब कि adventurous चीजें हो रही है उसमें. Who is in it? Rajkumar Rao, Varun Sharma, and Janhvi Kapoor. And Janhvi is going to surprise everybody, I feel, with Ruhi Afza. So yeah, I mean, and to be honest, this is a kind of a step that I really wanted to take after Kamyab, that I wanted to do a mainstream film, but at the same time a cinematic mainstream film, that we can shoot in forests and mountains and stuff like that. And Rajkumar is an amazing performer. Of course, and Rajkumar is somebody who I have been around because my Queen mein assistant tha. So Raj tab just shuru kar rahe the, and right. I used to go and call him from Vanity and all. Then I had co-written Trapped, so we became friends on Trapped also. And so yeah, when Ruhi Afza ki bari aayi, to Rajkumar, to I was very happy with, he's the kind of an actor jo bahut baar director ko audience bana deta hai, matlab, so so I absolutely, and I have been very lucky that way, that Sanjay Mishra to Deepak Dobriyal to Ajaydeep Bhai to Rajkumar Rao, I mean, I have had opportunity to work with some of these great actors, who bring so much life to the lines that are written and to the world that we are trying to recreate.
So will you wait for the cinemas to open? Will you release it online? मतलब where is the status of the industry? अभी इतना flux है तो आप लोगों को अभी Yeah. कैसे? Are you planning your lives at all, or are you just saying we can't plan? Right now we are in the process of finishing the film, and उसके बाद we'll try, because see, I have hopes from cinema opening, because Tenet जो क्रिस्टोफर नोलन का जो फिल्म का ट्रेलर आया है, I think नोलन ही हमारी नैया पार करेंगे, कि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि जुलाई में वो थिएटर्स में आ ही रहे हैं. So I think with Nolan coming in theaters, and there is a certain audience that is going to watch Tenet only in cinemas, चाहे 4 कुर्सी छोड़ के बैठना हो, चाहे 3 कुर्सी छोड़ के बैठना हो, चाहे जो भी रूल लाने हो, बट टेनेट का मजा तो आई थिंक सिनेमा हॉल में ही आएगा. एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो मैं एकदम, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, लाइक यू नो, चलो कुछ रिस्क लेंगे लेकिन जाएंगे सिनेमा हॉल में. Okay, I have one more question. I hope the internet holds for this. But like I said, you've seen a series of successes, and God willing, it continues. Have you ever thought of and prepared yourself for failure? Because when success is high profile, so will failure be. To be honest, I have prepared, because मैं बीच बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्री शूट करता रहता हूँ, जिनको मैं एडिट नहीं कर रहा अभी, उसका मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ. तो जब ऐसा बोल देंगे कि भाई आपकी ये फिल्म तो जा चुकी है और अब अगले साल तक आपको फिल्म नहीं मिलने वाली, या कोई एक्टर रेडी नहीं है काम करने को, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा, और मैं बहुत खुश रहूंगा उसमें भी, क्योंकि एटलीस्ट कोई मुझसे मेरा हुनर या टैलेंट, किस्मत छीन सकता है लेकिन हुनर नहीं छीन सकता, यू नो. सो आई विल ट्राई एंड बी अ फिल्म मेकर, वेदर इट इज एन इंडी फिल्म, वेदर इट्स अ, यू नो, आई आल्सो वांट टू वर्क ऑन चिल्ड्रन फिल्म. आई मीन चिल्ड्रंस के लिए हमारे यहाँ कोई सिनेमा ही नहीं बनता है, उन्हें भी पता नहीं हाउसफुल और ये सब ही देखना पड़ता है हमारे यहाँ. सो आई ट्राई एंड टेक सम रियली कूल चिल्ड्रन एक्टर्स, चाइल्ड एक्टर्स, एंड देन विल मेक अ फिल्म अराउंड देम, एंड दे विल, वो फिल्में बड़ी कम बजट में बन जाएगी, और मैं भी उसके लिए फ्राइडे रिलीज वाला चार्ज नहीं करूंगा, यू नो. सो आई बी हैप्पी टू डू मेक फिल्म्स on those subjects also. Yeah. Okay, thank you for your time. Yeah, good luck, and it was wonderful talking to you. Hopefully this COVID will go so we can get the experience of cinema, what was meant to be. Yes. And I hopefully will watch your film in cinemas. Yeah. Thank you, Abhinandan. Thank you, News Laundry. Thank you so much for inviting me. This is my first interview with you guys, and I'm so happy. Thank you. Thank you so much. That's it for now. Thank you for watching News Laundry, and I repeat, do pay to keep news free, because when the public pays, the public is served. When advertisers pay, advertisers are served. For all our full unedited interviews, videos, content, articles, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Thanks, Hardik. Take care. Good luck. Thank you. Good luck to you too.